Hi everyone, Ashish Kyal here, and this is a quick short video which I am going to share across simple strategy that actually works by combining the concept of something like Bollinger Bands with KST. ठीक है, तो ये दो बहुत ही पावरफुल मेथड है विच यू कैन कंबाइन। बहुत सारे जन के क्वेश्चन आ रहे थे, सर केएसटी के ऊपर वीडियो बनाओ। केएसटी इज अ टाइम इंडिकेटर, और इस टाइम इंडिकेटर को अगर आप सही तरीके से अप्लाई करोगे ना दोस्तों, तो बहुत जबरदस्त काम करता है। सो केएसटी टाइम इंडिकेटर अलोंग विथ बॉलिंगर बैंड्स, कैसे हमें इसे क्लब करना है, कैसे इसे देखना है, हाउ डू यू गो अबाउट इट, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ। सो बट before I move on, if these kind of videos you are liking, then do ensure to share it across with your friends, and do not forget to subscribe the channel, put down your comments, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर अक्रॉस। तो देखिए केएसटी एक बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, एंड बैंड्स के ऊपर हमें पता चलता है कहां पर मोमेंटम बन रहा है। सो इफ यू आर समवन, दोनों एक मोमेंटम है, बैंड्स विल गिव एग्जैक्ट एंट्री and KST will tell you if the momentum is picking up or not. So let me just share across my screen very quickly, and we'll look at this market, and just give me a second. Okay, if you are able to see this screen here, everyone, are you able to see the screen? This is a delta exchange platform which I use for crypto trading. It can be Bitcoin, BTC USD, Ethereum USD, बहुत सारे यहाँ पर कॉइन्स है जहां आप ट्रेड कर सकते हो। यू कैन ट्रेड इन फ्यूचर्स, यू कैन ट्रेड इन ऑप्शंस, and it's really fantastic. So let us look at Bitcoin over here, and I'm going to combine two methods, and overall I'm just going to go on the daily time frame chart. And the best part is you can clearly see the levels marked here directly। यहां से आपको दिख जाता है कौन से लेवल्स है, क्या है। अगर आपने एंट्री ली है, सो फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने पोजीशन ले रखी है, वो एंट्री लेवल आपको यहां पर दिख जाएगा डायरेक्टली, बाय प्राइस, सेल प्राइस, सारी चीजें। इफ यू लुक एट इथेरियम, इथेरियम तो जबरदस्त चला है दोस्तों। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू सर्टन चार्ट्स ऑफ इथेरियम। ये लाइंस में निकाल देता हूं स्क्रीन से। इट हैज बीन ऑन अ टेर एंड इट्स अनस्टॉपेबल इफ यू लुकिंग एट इथेरियम। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, दिस वाज द लेवल where you can see the buy happen, and this was the buy area, and look at the way it is moving on the upside. So फिलहाल if you're looking at all of these things you can clearly see, and यहां पर बहुत ही सिंपल है। अगर मैं सब कुछ हाइड कर देता हूं फिलहाल के लिए, एंड लुक एट दिस ह्यूज ब्रेकआउट, मतलब जहां हम स्ट्रगल कर रहे इंडियन मार्केट्स में, जहां मूवमेंट नहीं आ रहा है, यहां पर देखिए ये बुलिश एलियट वेव पैटर्न जबरदस्त है। टाइम साइकिल कॉन्सेप्ट वर्क करता है, यू कैन अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स हियर ऑल्सो। So this is Ethereum, and it has broken about the lifetime high levels, and it's not stopping. And you can see it works. That's why you can see the entry which I did here and the PNL, how much I'm making from these levels. So let's go on to this is the main portfolio. I'll go on and apply these concepts of two indicators, bends with KST. So यहां पर मैं अगर बॉलिंगर बेंड्स आपको अप्लाई करके दिखाता हूं, बहुत ही सिंपली। अच्छा, यहां से हाइड किया था, यहां विजिबल कर दिया, एंड आई एम गोइंग टू ऑल्सो अप्लाई एन इंडिकेटर along with that which is known as a KST। बहुत ही जबरदस्त इंडिकेटर है। ये दो इंडिकेटर को क्लब करना है। वी विल नॉट लुक एट इट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम इज टू बिग फॉर टेकिंग अ पोजिशन और टेकिंग अ ट्रेड। इट हैज टू बी लुक्ड आउट ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट। एंड 1 आवर यहां पे मैं चार्ट फुल स्क्रीन कर रहा हूं आपको। Okay, and I'm just checking if you are able to see the screen here, every one of you. Overall, if looking at this chart, you can see a very powerful movement on this indicator that happened here. This was a superb breakout. करता कैसे काम? Let me just explain it to you in a very simple fashion. ये जो बैंड्स है ना, these are Bollinger Bands. This is the center 20 मूविंग एवरेज, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे। बॉलिंगर बैंड्स के साथ हमें देखना है कि मोमेंटम बन रहा है कि नहीं। ये जो नीचे इंडिकेटर है, दिस इज अ केएसटी इंडिकेटर। ये बहुत ही पावरफुल टाइम इंडिकेटर है। केएसटी इज अ टाइम इंडिकेटर, एंड यू कैन क्लब दिस टाइम इंडिकेटर विद बैंड्स हियर।
Now, when you're looking at a band, when the markets or the price going sideways, you will see the band starts going sideways as well. You will see the contraction in the band happening. Breakout कब मिलता है? Breakout मिलता है when the upper line breaks on the upside. यहां पर the upper candle, so upper line का मतलब है the upper Bollinger Bands, when the prices breaks the upper line or the upper Bollinger Bands, जैसे यहां पर we get a classic indication of a breakout. और अगर इसी लेवल पे अगर हम यहां पर अप्लाई करके देखें KST, which indicates the momentum. So if you check, we can clearly see at this candle the momentum started going up because it was about the signal line and also about the zero line. That was a classic confirmation that the momentum is increasing, momentum started picking up, and a very strong breakout on bands has happened. That's how you have to look, combine both the price action, bands with KST. ठीक है, KST is not MACD. बहुत सारे जन कंफ्यूज हो जाते हैं, इट्स लाइक एन MACD. MACD इज वेरी डिफरेंट इंडिकेटर. MACD हिस्टोग्राम के ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया प्लेलिस्ट में, यू कैन चेक दैट. दिस इज KST. लेट अस लुक एट अनदर एसेट. ये मैं इथेरियम पे बता रहा हूं जो जबरदस्त चल रहा है एंड यू कैन सी दैट. नाउ इफ आई कंबाइन दिस विथ, instead of Ethereum, if I go and open Bitcoin, and let us see if a similar setup is what we can find out on a Bitcoin overall here. So let me go and do a full screen here Bitcoin पे. एंड यहां पर आप, ये मेथड है पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्कैल्पिंग के लिए pivot levels with MACD histogram. I have created those videos, you can check that. This is a positional scalping, not scalping, positional trading method which I am showing you right now. In this method, if you are looking at it, again, करना क्या है? पहली चीज, I need a close above the upper Bollinger Bands. Bands should go sideways, give a close, and then I need to see if there is an opportunity by looking at a KST indicator. These things we need to combine. If we look at the past history, okay, कहां पर? We can clearly see a very strong breakout here and the band was going up. ये जो breakout candle है, इसका लो stop loss रखना है. Next candle is a confirmation buy. That's how you have to look at it. If I come here, at this chart, at the overall this chart, the breakout happened here. Okay, the KST line, which is the green line, crossed above the zero line. Okay, that's how we have to look at it. यहां पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेट मी जस्ट जूम इन द चार्ट. Okay, we are seeing this is the breakout, next candle taking out the high where you have a buy. KST line was breaking above. यहां एक प्रॉब्लम है. Can you tell me what? Think about it. The KST line was below the zero, which means it's a reversal and momentum is increasing definitely, but we have to be careful. Once the KST is turned above the zero or just near to be turning back above the zero, that's when it is most important. तो जो ये वाले जो कैंडल्स है ना, देखिए ना यहां से, दिस इज सुपर, दिस इज वेरी वेल. सो जो नीचे से टर्न हो रहा है वहां थोड़ी गड़बड़ हो सकती है. सो वहां पर हमें केयरफुल रहना है बिकॉज ये नीचे से टर्न हो रहा है, जीरो के ऊपर नहीं है. जीरो के ऊपर असली मोमेंटम बनता है. सो रिमेंबर दिस थिंग, whenever you are combining KST with Bollinger Bands, the most important aspect that you have to look at it is Bollinger Bands पे ब्रेकआउट मिल रहा है, KST पे जीरो के ऊपर आ रहा है, दोनों को कंबाइन किया, सॉलिड सेटअप. सो यहां पर हमें सॉलिड सेटअप मिला वेयर द KST लाइन जीरो के ऊपर है और अभी बॉलिंगर के ऊपर ये ब्रेक दिया है. नाउ इफ प्राइसेस ब्रेक अबाउट दिस हाई, क्लासिक बाइंग सेटअप, क्लासिक बाइंग सेटअप, बिकॉज मोमेंटम बन रहा है. दैट्स द पावर ऑफ KST. KST का और भी बहुत सारा वे है,
अप्लाई करने का। इट्स अ टाइम साइकिल इंडिकेटर। अगर आप इसके साथ में टाइम साइकिल को क्लब करोगे तो वो तो बहुत ही जबरदस्त वे से कंबाइन होता है, बहुत ही जबरदस्त वे से चलता है। सो दिस इज हाउ यू कैन कंबाइन इट। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट क्रिप्टो इज व्हाट, वंस इट स्टार्ट्स ट्रेंडिंग इट डजंट स्टॉप इजीली, यू गेट अ क्लासिक मूव। सो अगर मैं बिटकॉइन पे भी देखूं, सुपर प्राइस एक्शन, डबल बॉटम, बाइंग अपॉर्चुनिटी, नेकलाइन ब्रेक, अपसाइड, रीटेस्ट नीचे गया, फिर रिवर्सल। दोस्त अगर ये चला ना, रोकेगा नहीं। आई एम टेलिंग यू, इफ दिस नाउ गोज अप इट विल शो अ वेरी स्पेक्टेकुलर मूव। रिस्क रिवॉर्ड निकालो, स्टॉप लॉस डालो और ट्रेड करो। That's how you have to combine these methods. That's how you have to look at these methods. And once you do that, you will see the power of trading crypto. सुपर बुल रन में है, लाइफ टाइम हाइस पे है, मोमेंटम मिलता है, ट्रेड जबरदस्त मिल रहा है, सेटअप सारे काम करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। सो कंबाइन करिए इस मेथड को। और देखिए इस मेथड, द मेथड दैट आई एम शोइंग यू राइट नाउ, यू कैन ऑल्सो कंबाइन इट इन ऑन नॉट ओनली बिटकॉइन, यू कैन डू इट ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी, डू दैट। लेकिन इस पे एक्सपेरिमेंट करके देखो, बहुत मजा आएगा। इफ यू वांट टू एक्सपेरिमेंट इट, लिंक इज डाउन देयर, यू कैन क्लिक ऑन इट and check how well it works, and let me know that if it works for you. There is also a premium Telegram community if you are a part of this crypto trading. सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट, लिंक नीचे है। एंड साथ ही में ये वीडियोस अगर आपको स्ट्रैटेजी वीडियोस पसंद आ रहे, आउटलुक वीडियो नहीं है, निफ्टी बैंक निफ्टी का आउटलुक वीडियो नहीं है, स्ट्रैटेजी वीडियो है, तो मुझे बताइए, आई विल कीप मेकिंग सच स्ट्रैटेजी वीडियोस फॉर यू ऑल। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे जल्द। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी आउट। हैव अ वंडरफुल टाइम, बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर।